Now today we'll be doing partition values. That's second part of the chapter measures of central tendency. So today we're going to learn about partition values. Now first let's understand the concept of this, because just by remembering the formula you won't be able to solve some typical sums. You also have to understand the concept of this partition values. Now first measure of central tendency, what we saw was mean, where mean is what? Simple sum of observation अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सारे जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उनका टोटल किया और डिवाइड किया बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नाउ in partition value, what we are going to do is, first of all, the first step is we have to arrange all observation. Okay, we have to arrange all observation. Now for partition value like median, you can arrange it in ascending or descending. Answer does not change, but generally we follow the rule that we always arrange it in ascending order. Ascending order यानी क्या? मिनिमम से मैक्सिमम. तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस है, ओके, वी आर टॉकिंग ऑफ रॉ डेटा राइट नाउ. रॉ डेटा यानी नंबर्स सब दिए. तो अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन पार्टीशन वैल्यू में सबको अरेंज कर दिया. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने क्लास में टेस्ट रखा ऑफ 30 मार्क्स. तो ऐसा स्टूडेंट है जिसको 1 मार्क भी मिला और ऐसा स्टूडेंट है जिसको 30 मार्क्स भी मिला. तो मैंने वो सारे स्टूडेंट्स को लाइन में अरेंज कर दिया, स्टार्टिंग विद द स्टूडेंट स्टैंडिंग ओवर हियर with the minimum mark and student standing over here with the maximum marks. Okay, या ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम हाइट वाला हाइट आई वांट टू फाइंड, तो मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट, तो मैंने सारे स्टूडेंट्स को ऐसे अरेंज कर दिया. नाउ आई वांट टू फाइंड कि ये सेंटर मोस्ट पोजीशन पे जो स्टूडेंट है उसका हाइट क्या है, या सेंटर मोस्ट पोजीशन पे जो स्टूडेंट खड़ा है उसके मार्क्स कितने हैं. तो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे उसको हमने बीच में से डिवाइड कर दिया, एक पार्ट कर दिया. तो ये जो सेंटर मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, ये जो स्टूडेंट है जिसका मार्क्स या उसका हाइट या उसका कोई वेरिएबल, इसको हम कहते हैं मेजर मीडियन. मीडियन यानी द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. अंडरस्टूड दिस? मीडियन यानी आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? ओके, तो पार्टीशन वैल्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पार्ट कर दिया. तुमने देखा सारे ऑब्जर्वेशंस को अरेंज कर दिया और बीच में जो ऑब्जर्वेशन है उसका वैल्यू क्या है. रिसेंटली ऐसा कहा था कि कोरोना वायरस पीक हो गया है, उसके मीडियन पे आ गया है. उसके मीडियन पे आ गया यानी उसका जो ग्राफ है वो बढ़ता 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 अब वो सेंटर मोस्ट पीक पे आ चुका है. अब यहां से वो नीचे ही जाएगा होपफुली. तो मीडियन यानी क्या? द सेंटर मोस्ट या मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जिसको हम कहते हैं मीडियन. तो पार्टीशन वैल्यू यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 2, उसका पहला मेजर है मीडियन. तो फर्स्ट मेजर इज मीडियन. तो ये मीडियन का डायग्राम पता चला सबको. नाउ सेकेंड है, अब एक हमने ये व्यू लिया कि जो बीच वाला ऑब्जर्वेशन है, दूसरा व्यू लिया हमने क्वार्टाइल का. नाउ व्हाट इज क्वार्टाइल? क्वार्टाइल में भी अगेन वी अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. क्या 5:30 का चालू केलं मी बाकी केव्हाचं क्या हुआ स्वयं?
स्वयं क्या हुआ? ओके, डिसअपियर्ड. Okay, sorry. So quartile में we arrange the observations again in ascending order. Now median में तुम ascending करो या descending करो, middle most तो same ही रहने वाला है. You agree or you don't agree? But हम हर एक में मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल में असेंडिंग में ही अरेंज करेंगे. सो आई राइट ओवर हियर, अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर. क्योंकि फिर ऐसा क्यों याद रखना कि एक में डिसेंडिंग बाकी में असेंडिंग, खाली कंफ्यूजन. असेंडिंग मींस व्हाट? मिनिमम टू मैक्सिमम. ओके, ये भी लिखना है हमें, मिनिमम से मैक्सिमम. तो तुम देख सकते हो ये मिनिमम है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है तो ये मैक्सिमम है. तो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पे क्वार्टाइल है, यानी वो ऑब्जर्वेशन को, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया. क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3. क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3. तो यू विल से कि सर 3 ही है, 4 कहां से हुआ? 4 हुआ ना. देखो ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2, ये हो गया पार्ट 3 और ये हो गया पार्ट 4. अग्री? अग्री अग्री. तो इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया जिससे हमें 4 क्वार्टर मिला. क्वार्टर, क्वार्टाइल यानी क्वार्टर, क्वार्टर यानी 1/4. वी से क्वार्टर पास्ट 6 એટલે શું? ક્વાર્ટર પાસ્ટ 6 એટલે 6:15, 6:15. अंडरस्टूड दिस? सो यहाँ पे Q1, Q2 एंड Q3. तो यहाँ पे हमारे पास क्वार्टाइल में 3 मेजर है, Q1 है, Q2 है और Q3 है. नाउ बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट वन, एक बार इतना लिख लो, देन आई गो फर्दर. मीडियन हो गया, क्वार्टाइल हो गया. यानी मीडियन में क्या किया? ऑब्जर्वेशन को हाफ कर दिया, सेंटर मोस्ट फाइंड किया. क्वार्टाइल में 4 पार्ट कर दिया. अब हम इससे आगे बढ़ते हैं थर्ड में, जिसको हम कहते हैं डेसाइल. डेसाइल यानी क्या? ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इसको अरेंज कर दिया फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, अगेन असेंडिंग ऑर्डर. उसमें 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 10 पार्ट्स हो गया, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. ओके, ये मैं फ्री हैंड कर रहा हूं तो इट मे नॉट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट विथ स्केल एंड प्रॉपर मेजर इक्वल डिस्टेंस पे आएगा ये. तो यहाँ पे हमारे पास क्या मेजर है? डेसाइल में हमने सारे ऑब्जर्वेशन को 10 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. पहला पार्ट है D1, फिर D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. And then came the fourth one, that is known as percentile. परसेंटाइल, डेसाइल यानी 10, याद रखना. परसेंटाइल यानी 100, यानी 100 पार्ट्स में सारे ऑब्जर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया. इनफैक्ट तुम्हारा परसेंटाइल रैंक, हेलो हेलो, परसेंटाइल रैंक जो लोगों को तुम बताते हो जब कोई तुम्हें पूछता है कि रिजल्ट शू आयु, तो परसेंटाइल रैंक हम बोलते हैं. तो ये परसेंटाइल रैंक comes from this concept of percentile. I'll explain it to you when we do the sums. Okay, तो percentile जो है, we divide all the observation into 100 parts. Again, minimum से maximum.
इसको हम 100 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. ओके, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. यहां पे चालू होता है विथ P1, P2, P3, P4. It goes up to P99. T यानी परसेंटाइल 99. तो 4 मेजर्स हमने देखे यहां पे. हमने देखा मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल. 4 measures of central tendency 2 we have seen. Now हम इसको partition value क्यों कहते हैं? इसको हम partition value इसके लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि observations का part कर दिया है. That is why they are known as partition value. Understood this? Understood what is decile, quartile, percentile and median? Median तो तुमने किया ही होगा. Now, should I proceed? Now, let's write the formula first of all for raw data. Now, raw data के लिए फॉर्मूला जो हम लिखते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप है अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर. जो हमने पहले लिखा भी है, फिर भी एक बार फिर से लिख लो. असेंडिंग ऑर्डर. Step 2, we have to apply the formula. Now, if you are finding median, it is denoted by M. Median is value of n plus 1 upon 2th observation. Median M is equal to value of n plus 1 upon 2th observation. So what happens to quartile? Quartile. Now quartile में तुमने देखा यहाँ पे there are 3 measures, 1, 2 and 3. So I will write the formula quartile Qj is equal to value of j in the bracket n plus 1 upon what? क्वार्टाइल है तो कितना पार्ट बनाया उसका? 4 parts. Very good. So upon 4th observation. Now ये j क्या है? ये j क्या है? j है 1, 2, 3. So ये जो j है that is either 1 or 2 or 3. यानी Q1 है तो ये 1 आएगा, Q2 है तो ये 2 आएगा, Q3 है तो यहां पे हम 3 लिखेंगे. थर्ड, decile dj. Now j is equal to 1, 2, 3 up to 9. So again formula is value of j in the bracket n plus 1 upon 10th observation. And then comes percentile. Pj, not joke wala Pj, Pj of percentile. J is equal to 1, 2, 3 up to 99. Value of j in the bracket n plus 1 upon 100th observation. Now student were asking me कि सर ये formulas chapter 3 के यानी क्या लिखना है? तो तुम्हें formulas में लिखना है measures of central tendency 1 यानी mean, median, mode,
raw, discrete, continuous, combined mean, weighted mean, geometric mean. और आज से ये फॉर्मूला नए ऐड हो जाएंगे, दैट इज ऑफ क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, मीडियन. फॉर्मूला से तुम बना ही सकोगे अब खुद. आई डोंट थिंक कंसेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए. क्वार्टाइल है तो यू नो इट इज Q1, Q2, Q3, 4 पार्ट्स. डेसाइल है तो 10 पार्ट्स. परसेंटाइल है तो 100 पार्ट्स. नाउ हो गया यहां तक सबका. Let's do a sum, okay, of a raw data. Now ध्यान दो students. Now as you can see from this diagram, okay, तो यहाँ पे कुछ rules लिख सकते हो तुम. Now ये जो है center most, ये हमारा median है. तो can I say median is equal to Q2 is equal to D5 is equal to P50? Can I say like this? Can I say all are the centermost observation? डायग्राम देखो, सब बीच में आ रहा है, ये भी बीच में, ये भी बीच में, और यहाँ पे जो P50 होगा ये भी सेंटर मोस्ट. तो कैन आई से दिस इज वन ऑफ द रूल. सेकेंड रूल, कैन आई से Q1 इज इक्वल टू P25. Q1 यानी क्वार्टाइल 1 is equal to P25, percentile 25. Can I say this? Then third one, I'll also say Q3 is equal to P75. Please write this as well. तो अगर Q1 मिल गया तो P25 तुम डायरेक्टली लिख सकते हो. Q3 मिल गया तो P75 डायरेक्टली लिख सकते हो. M मिल गया मीडियन तो Q2, D5, P50 all are going to be same, क्योंकि Q2 क्या है, 2 in the bracket n plus 1 divide by 4. तो 2 और 4 कैंसिल होके अपॉन 2 ही हो जाएगा. 5 upon 10 1 by 2, 50 upon 100 1 by 2. So it always remains the same. Now let's go to this sum. This is a textbook illustration, illustration 17. मैंने थोड़ा modify किया है. कौन सा ऊपर? So ऊपर कौन सा फरी तो बाकी लिखवानो तो okay. Okay, now in illustration 17 from the textbook you have to just find the median, but I have modified the sum and you will find median Q1, Q3, D7, P35 from the following data. Now first step is you have to arrange the data in ascending order. Ascending यानी क्या? Ascending यानी minimum से maximum. तो चलो सबसे पहले इसको अरेंज कर दो. तो डेटा क्या आता है हमारे पास? सबसे मिनिमम देख लो क्या है इसमें, 55. Then 63. Then 68. Then 72. Then 80. Then 80. Then 85. Then 90. 90. Then 92. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, 9 है तो n लिख लो. n is equal to 9. n is number of observation. तुम लोग प्लीज टेक्स्ट बुक बंद कर देना. Now पहला measure is we want to find median. Now formula is median m is equal to वैल्यू ऑफ, ये सब तुम्हें लिखना है प्रॉपरली. ओके, ऐसा नहीं सिर्फ n plus 1 डिवाइड बाई 2 कर दिया. n plus 1 डिवाइड बाई 2 यथ ऑब्जर्वेशन, सो विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ
n is 9 plus 1, 10 divided by 2 is fifth observation. Now fifth observation क्या है? We count 1, 2, 3, 4, 5. So which is equal to 80. So M median is equal to 80. મને ખબર ના પડી સમજમ ફરી આ 80 કઈ ના આવ્યું Your median ની formula શું છે? Value of n plus 1 upon 2th observation. આ ખબર પડી તને? હા સર હવે n શું છે? I'll do it over here. n is 9 plus 1 upon 2 which is equal to 10 upon 2 which is equal હા to 5. So value of fifth observation. ચલાવ્યો? હા હવે fifth observation એટલે ગણવાનું 1, 2, 3, 4, 5. Fifth 80 હા observation is 80. So median વચ્ચેનું observation is 80. Got it? હા સર હા Okay. Now second one. We want to find out Q1. Now Q1. So quartile 1 is equal to value of 1 है तो J1 है तो 1 n plus 1 by fourth observation which is equal to value of 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता 9 plus 1 by fourth observation. I'll add a step. Understood, Manav? Manav. યસ સર યસ સર Okay. Which is equal to value of now n 9 plus 1 is 10. 10 divided by 4 is 2.5th observation. Now all of you will please pay attention on the screen please. Now 2.5th observation यानी ये हमारा सेकंड है ये हमारा थर्ड है तो न सेकंड न थर्ड 2.5 तो इसके लिए एक हम फॉर्मूला बनाएंगे ओके ये हम खुद फॉर्मूला डेवलप करेंगे प्लीज ध्यान दो ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन plus 0.5 plus 0.5 value of third observation minus second observation. फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ध्यान दो वैल्यू ऑफ ये 2.5 है तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस ये 0.5 वैल्यू ऑफ सेकेंड के बाद नेक्स्ट क्या आता है थर्ड माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन तो कैसे आएगा ये पहले सेकेंड ऑब्जर्वेशन ढूंढते हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 63 सो 63 प्लस 0.5 in the bracket third observation third observation क्या है 1 2 3 68 minus second observation 63 which is equal to 63 plus 0.5 68 minus 63 is 5 is equal to 63 plus 0.5 into 5 is 2.5 which is equal to 65.5. Therefore, Q1 is equal to 65.5. સર observation 2 plus observation 3 divided by 5 આમ ના ચાલે હા સર એવું બી થાય છે ચાલે હોલ્ડ ઓન ચાલશે પણ 0.5 છે એટલે ચાલશે અગર માન લે અહીંયા 0.3 હોત તો શું કરત તું એટલે
2.5 ની બદલે 2.3 હોત તો શું કરત? 3 હા બરાબર. એટલે સી કરી શકીએ છીએ આમાં, પણ એક જ સિસ્ટમ ફોલો કરો ને એટલે તમારે વાડીએ ઘડીએ અલગ અલગ મેથડ્સ યાદ ના કરવી. તો ફોર્મ્યુલા શું યાદ રાખવાનું છે કે વેલ્યુ ઓફ સેકન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન પ્લસ અહીંયા 0.5 હોય તો 0.5, 0.7 હોય તો 0.7, 0.28 હોય તો અહીંયા 0.28. ખ્યાલ આવ્યો? તો ઇટ becomes easy to follow this formula. Got it? Yes. That's why I've gone for this formula. સર આપણે કોઈ બીજા ઓબ્ઝર્વેશન ના લઈ શક્યા? ના, કેમ કે 2.5th ઓબ્ઝર્વેશન જ છે ને Q1. તો બીજા કેવી રીતે લઈ શકીએ? Q1 નો ફોર્મ્યુલાથી જે આવ્યું એ જ લેવું પડે ને આપણે. हेलो सर, आज 68 माइनस 63 मन नहीं समझ पड़ी. वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन. Okay, Ron. Okay. See, 2.5th observation means what? Okay, you want, this is your second observation, this is your third observation. You agree with me, Ron? यस सर. ત્યાં બધાને અરેન્જ કરીએ અસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં. તો 55 is minimum and 92 is maximum. So અહીંયા જે છે એ 55 વાળો છે, અહીંયા જે છે એ 92 માર્ક્સ વાળો છે. હવે તારે જોઈએ છે Q1 એટલે આ પોઝિશન પર Q1 પર કે કેટલા માર્ક્સ છે. તો અહીંયા આવે છે 2.5th ઓબ્ઝર્વેશન. હવે 2.5 કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું? 2 છે, 3 છે, 4 છે, 5 છે, વી કેન ડુ ઇટ. તો 2.5 આવે તો આપણે આ ફોર્મ્યુલાને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દઈએ. વેલ્યુ ઓફ સેકન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન લઈ લઈએ પ્લસ 0.5, 0.5 છે એટલે 0.5 અહીંયા લઈ લઈએ. વેલ્યુ ઓફ સેકન્ડ પછી શું આવવાનું છે? થર્ડ માઇનસ સેકન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન. ગોટ ઇટ? यस सर. હજી બે ત્રણ કરશું ને એટલે કન્સેપ્ટ વિલ બીકમ સ્ટ્રોંગ. શુડ આઈ ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ વન? Q3. યસ સર. Okay. Now, Q3 is equal to value of, now J क्या आया? 3 आया, n plus 1 upon 4th observation. So which is equal to value of 3 in the bracket, n is 9 plus 1 upon 4th observation, which is equal to value of 3 into 10, 30 divided by 4. So 7.5th observation. 7.5th observation. कैसे आया? 3 into 10 divided by 4, which is 7.5. 3 tens are 30 divided by 4. 30 का half 15, 15 का half 7.5. Now, can you make the formula out of this on your own? पहले खुद करो, खुद बनाओ इसका फॉर्मूला. यही बनाया सबने? યસ સર. हेलो सर. यस सर. यही बनाया? हेलो सर. हाँ बोलो मानो. પૂછો ને સર, આ બધામાં છે ને
કન્ફ્યુઝ બહુ થયો છું બધી ફોર્મ્યુલાઝમાં. ના ના નહીં થાય, તો કન્ફ્યુઝ નહીં થાય. તું બધી ફોર્મ્યુલા રોજ 8 વાર 10 વાર લખજે એટલે યાદ રહી જશે, પછી કન્ફ્યુઝન નહીં આવે. ઓકે સર. કન્ફ્યુઝન ક્યારે થાય? જ્યારે આપણને યાદ ના રહે. યાદ ક્યારે ના થાય? જ્યારે આપણે પાક્કું ના કર્યું હોય. આપણે એકવાર જોયું તો યાદ ના રહે, આપણે રિપીટેડલી એ કરવું પડે. એટલે પહેલી વાર સ્વાભાવિક છે કે કન્ફ્યુઝન થાય, પણ એઝ યુ સ્ટાર્ટ રાઇટિંગ અગેન એન્ડ અગેન, લર્નિંગ ધ ફોર્મ્યુલાઝ, કન્ફ્યુઝન વિલ ગો અવે. નાઉ ધ્યાન આપ, ત્યાં ફોર્મ્યુલા બનાવ્યું બેટા? ના સર હજી બાકી છે. તો કઈ રીતે બનાવીશ જરા મને કહેતો. સર પેલા 7th ઓબ્ઝર્વેશન વેલ્યુ ઓફ 7.5 ઓબ્ઝર્વેશન છે, તો એને કઈ રીતે આપણે બ્રેક કરવાનું બે ભાગમાં? વેલ્યુ ઓફ 7 7 + 0.5. અહીંયા 0.5 છે તો 0.5, 0.6 હોય તો 0.6, 0.85 હોય 0.85. ખ્યાલ આવ્યો? હા. હવે આપણે જોવાનું છે કે સાતમું ઓબ્ઝર્વેશન કયું છે. તો ક્વેશ્ચનમાં જુઓ 1 2 3 4 5 6 7. આ છે સાતમું ઓબ્ઝર્વેશન, 7th ઓબ્ઝર્વેશન, અને આ છે 8th ઓબ્ઝર્વેશન 85. તો 85 અને 90. તો 85 is 7th observation plus 0.5. 8th observation is 90 minus 7th observation is 85, which is equal to 85 plus 0.5 into 5, which is equal to 85 87.5. plus, yes, 2.5 87.5. equal to 87.5. So therefore Q3, आई एम श्योर तुम सब अच्छी पढ़ाई करो और ये Q3 तुम्हारी गाड़ी हो. ओके, Q5 तो अभी है नहीं सिलेबस में, बट Q5 Q7 ओके, ये सब कार्स तुम बाई करो. हो गया Q1 एंड Q3. कैन आई से Q2 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मीडियन इटसेल्फ इज Q2. Yes. अगर तुम फाइंड करोगे तो भी यू विल गेट द सेम आंसर. अंडरस्टूड दिस? Yes. Now let's go to the next one. D7. अब D7 is decile 7. So value of 7 in the bracket n plus 1, decile है तो upon 10 observation, which is equal to value of 7, n is 9 plus 1 upon 10 observation, which is equal to value of 7 into 10, 70 upon 10. 7th observation. Now 7th observation क्या है देख लो. 7th observation is 85. So directly मिल गया 85. So D7 is equal to 85. Got it? Got it, all of you? Yes, sir. Now, Yes sir. interesting, P 35, percentile 35 is equal to value of 35 in the bracket n plus 1 by 100th observation, which is equal to value of 35 in the bracket 9 plus 1 by 100th observation, which is equal to
value of 10 3.5th observation. Now 3.5th observation है तो घबराने की जरूरत नहीं है. Value of third observation plus 0.5 value of fourth minus third observation, which is equal to third observation is 1, 2, 3, 68 and 72. Plus 0.5 into 4, which is equal to 68 plus 2, which is equal to 70. Therefore, P35 is equal to 70. हो गया सबका? Yes, sir. Now in illustration 25, you have to find Q1, D7, P40, but I'll edit this and you find median Q1, Q3, D7 and P40 for the following data showing runs scored by batsman in his 20 innings. यानी there will be 20 observation. पहले तुम सबको ascending order में arrange करो, उसके बाद you find out median, quartile 1, quartile 3, D7 and P40. Start doing this sum on your own and give me the respective answers. ये तुम्हें खुद करना है अभी. What's the median? Still doing? Uba. 1.5. How much? How much is the median? 10.5. 10.5. Yes. 20 observation. 50. 10.5. Okay, so but वो तो 10.5 observation करता है. वो observation क्या है? Median क्या है? Median is 10.5. 50. 50 sir, 50. Median is 50 beta. 10.5 is, see, you have just found this one. That's not the answer. Then you have to count. No? You have to see, okay, it was 2.5, so this is 2, then 0.5, then 3 minus 2 observation. Sir, 50. 50, correct. Median is equal to 50. Formula for this, what you got was value of 10.5th observation. So value of 10th observation is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, which is equal to 47 Yes sir, 50. in 50. okay, plus 0.5, 53 minus 47. So 47 plus 0.5 into 3 into, 6, which is equal to 47 plus 3 is equal to 50. Formula लिखना पूरा, okay? Okay, find out Q1.
20 plus 1 divided by 4. 5.2 fifth observation. तो कैसे करेंगे इसको? Value of fifth observation plus 0.25 value of sixth minus fifth observation, which is equal to fifth observation. We have to count 1, 2, 3. 28.25. 28.25. Correct. Find Q3. What is D7? 62.7. P40 is equal to 35.2. Try the sum written on the screen, this one. It's extra sum. Okay, now see, there's a typical sum. Find the median of observation 2, 1, 3/4, 3, then 3/2, 2/3, 3 1/3, and 1/8. Now first we have to arrange these observations in ascending order. So that's the first part. We have to arrange them in ascending order. तो ascending order में arrange करने के लिए सबसे पहले हम इसको normal कर देते जितना कर सकते 2. Now 1 3/4 को कैसे solve करते? 4 1s are 4 plus 3 7/4. Okay, so I write 7/4. Then I write 3. Then 7/2. 3 1/2 is 3 2s are 6 and 1 7/2. Then 2/3. Then 3 1/3 is 3 3s are 9 and 1 10/3. And then 1/8. Now You're done. okay, that's awesome. Now यहाँ पे हमें इसको ascending order में arrange करना है तो हमें देखना पड़ेगा which is the lowest. तो मेरे हिसाब से lowest will be 1/8. तुम कैलसी पे करके चेक कर सकते हो. So 1/8 is the lowest. Then what is the next lowest? 2/3. 2/3. 2/3, 0.67. Very good. 2/3. Then what? पहले देख लो. Numerator is smaller and denominator is larger. Okay, वो सब हमने कर लिए. Then next will be 4/7/4. 3 7/2 is 3.5. ये दोनों हो गया. 10/3 is 3.3. So 7 divided by 4 is equal to 1.75. तो 7 divided by 4. उसके बाद आएगा 2. उसके बाद आएगा 3. उसके बाद आएगा 10/3 3.33 और उसके बाद आएगा 7/2 3.5. So 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. So n is equal to 7. Median is equal to value of n plus 1/2th observation, which is equal to value of n is 7 plus 1 8/2
is equal to fourth observation. So 1, 2, 3 and 4. Fourth observation is 2. So M is equal to 2. Answer. Come to this one. Although this is also solved in our video lecture, the observation of an ungrouped data are A by 8, A by 2, A by 6, A by 4, A by 4, A by 3, where A is greater than 0, obviously. If the median of the data is 2, so median is already given 2, find the value of A. So सबसे पहले we arrange in ascending order. Now tell me, A by 2 smallest है या A by 8 smallest है? A by 8. 8. A by 8, because A by 8 यानी उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया, A by 2 यानी सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड किया. So A by 8, उसके बाद A by 6, उसके बाद A by 4, again A by 4, A by 3 and A by 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ऐसा गिन लेना. Okay. So N is equal to 6. So now median is equal to value of N plus 1 upon 2th observation. So median is equal to value of 6 plus 1, 7 divided by 2 is 3.5th observation, which is equal to value of third observation plus 0.5 value of fourth minus third observation. तो चलो चेक करते हैं what is the observations over here. Third and fourth are the same. So third observation is A by 4 plus 0.5. A by 4 minus A by 4 is 0. 0 into 0.5 is also 0. So median is equal to A by 4. Therefore, median is equal to 2. So 2 is equal to A by 4. Therefore, A is equal to 8. Answer. Got it? Got it? Yes, sir. Now, what you will be doing is, you will be doing the homework as I have given to you in my schedule, and tomorrow you have a test, so prepare for it and finish off the homework. Next lecture we will be doing all these measures for discrete and then for continuous, and then we'll do some typical sums also. All of you understood the concept of partition value? कंसेप्ट पता चल गया ना? Yes, Yes. sir. और उसको पोजीशनल एवरेज क्यों कहते हैं या पार्टीशन वैल्यू क्यों कहते हैं पता चला? इसको है ना पोजीशनल एवरेज भी कहते हैं. पोजीशनल एवरेज यानी जो पोजीशन पे है, ओके, जैसे सेंटर मोस्ट है, Q1 है, Q3 है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशनल एवरेज. मीन वॉज जस्ट एवरेज, यहाँ पे पोजीशनल एवरेज है. Got it? Okay, so that's it. If you have any doubts, you can wait. You have any doubts in the homework given to you? Geometric mean में कोई doubt? No, sir. Yes, sir. देख लो अगर doubt हो तो ask me. Sir, I have a doubt. Yeah, tell me what's the doubt?
Answer study material question number 22 sub question 10. Question 22, sub question 10 in the study material. Okay, Yes. or let me check. Okay, I'll do this sum. All of you please wait. So this is the sum. Have I copied the right sum? Tithi? Yes, sir. Yes. Okay, now it's very simple sum, Tithi. So here we have x by 8, 2x, 16x, 64x is 20. Geometric mean is already given. So g is equal to 20. Now we have to find the value of x. So g is equal to 20 is equal to 1, 2, 3, 4. Fourth root of x by 8 into 2x into 16x into 64x, which is equal to, now we solve this, okay, 2 4s 4 4s. So what we get is 64 into 4 is 256. x 1 2 3 4 x raised to 4 का fourth root. Now one way to solve is कि fourth root है तो यहाँ पे तुम 20 raised to 4 कर दो is equal to 256 into x raised to 4. एक ये मेथड है, ये भी अच्छा मेथड है. 20 raised to 4 is 20 into 16,000 is equal to 256 into x raised to 4. इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 256, तो 625 is equal to x raised to 4. So you have to now use trial and error method कि कौन से नंबर को रेज टू 4 करोगे तो तुम्हें 625 मिलेगा, या कैलसी पे ट्वाइस अंडर रूट कर लो तो 5 रेज टू 4 is equal to x raised to 4, therefore x is equal to 5. So this is one of the method of solving it. Other method to solve it is 20 को as it is रहने दो, fourth root को as it is, fourth root को as it is रहने दो, 256 x raised to 4. Now what is 256? 256 is 4 raised to 4 is 256. So 4 raised to 4 into x raised to 4 is equal to 256. So 4 raised to 4 is 256. So is equal to, अब क्या करेंगे, 4 raised to 4 into x raised to 4 whole raised to 1 by 4. तो 1 by 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा x is 20. Therefore x is equal to 5. अब मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दिए, तुम जो ऑप्शन में कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो. Okay, sir. Got it? Yes.